Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine it is 3 p.m. on a Wednesday. Oh, the classic midweek slump. Right. So you're sitting at your desk, and the soft glow of the monitor is just reflecting in your eyes. Yeah. The office is humming around you, or, maybe it's the quiet solitude of your home workspace. You've just cleared out an absolute avalanche of emails. A very familiar feeling. And you are functioning. You're meeting expectations. You are getting a paycheck. Doing the job. Exactly. By all outward metrics, anyone looking at you would say, you are doing fine. You are surviving. Right, surviving. But if we strip away the metrics and just look at your internal state, are you thriving? That is the million-dollar question, isn't it? It really is. There is this profound, quiet contrast we experience in our working lives. On one side, there's the feeling of just like treading water, trying to keep your head above the surface of this endless to-do list. And feeling your energy slowly leak out of you as the hours tick by. Yeah, exactly. But on the other side, there is that incredibly rare electric state where you are buzzing with this quiet, sustained energy. You're absorbing new skills, you're adapting, and you just feel completely alive in your work. Yes. And that profound contrast is exactly the territory we're exploring today. It's basically the ultimate question of the modern workplace. I mean, we spend a massive portion of our waking lives engaged in work. Totally. So the difference between merely surviving those hours and actively thriving in them, well, it's not just a matter of having a good day or a bad day. Right. It represents a fundamental difference in our human psychology, our physiology, and really our overall trajectory in life. When you are surviving, your world narrows. But when you are thriving, your world expands. Precisely. And to anchor this exploration, we are not looking at corporate buzzwords or motivational speeches. We are grounding our conversation in an incredibly rigorous piece of research. Which is so refreshing. Right. This is an actual peer-reviewed article published in the prestigious Journal of Organizational Behavior. Oh, nice. Yeah. And for those who might not spend their days reading academic rankings, this is an ABDC-A star journal. So the heavy hitter. Exactly. That designation essentially means it is the gold standard, like the top tier of global business and management research. Yeah. The article is titled Thriving at Work, a meta-analysis. A classic. It really is. It was authored by this brilliant team. We have Anne-Kathrin Kleine, who is affiliated with both Leipzig University and the University of Groningen. Right. Then there's Cort W. Rudolph from St. Louis University and Hannes Sacker, also from Leipzig University. The rigor of this specific paper is genuinely foundational. Yeah, Right. absolutely. When we look at the landscape of organizational behavior literature, this is the kind of heavily vetted, comprehensive work that sets the stage for decades of subsequent research. Wow. I mean, it takes a messy, abstract concept like thriving and actually pins it down with hard data. Which we desperately need. But before we unpack the mechanisms of how they actually did that, I do want to share a quick housekeeping note with you, our loyal listener. Go for it. So starting from March 2026, we have already become a weekly podcast featuring an episode on every Sunday and Monday. It's been a great rhythm. It really has. On Sunday, we do a classic paper or book review, while the Monday episode keeps the focus on publications from top-tier peer-reviewed journals. Keeping the standards high. Exactly. We love our loyal subscribers, and we just want to thank you for supporting this initiative. Truly. And, AI-assisted podcasts are heavy on nature and the climate, with considerable water intake by the back-end data centers. Which a lot of people don't realize. Right. So limiting the podcast weekly release is our way to give back to the climate change initiative without losing the richness of our discussions. And that schedule actually creates a really beautiful intellectual bridge for us. Oh, how so? Well, tomorrow, for instance, we have planned a discussion on a more recent paper from the Journal of Occupational and Organizational Psychology. Which is another ABDC-A star journal. Exactly. That one is written by Professor Gianser from the University of Surrey and his team of co-authors. Oh, I'm looking forward to that one. Yeah, and what's so fascinating is that they were directly inspired by today's contemporary classic paper. Really? Yeah. In Professor Gianser's own words, he actually mentions, quote, the meta-analytic study by Kleine, Rudolph, and Sacker 2019 gave us the opportunity to critique the positionality of the engagement construct within the thriving literature. Oh, wow.
I always find it so compelling how these academic conversations just speak to each other across time, building upon one another to uncover the truth about human behavior. It is the beauty of the scientific method. So we kindly urge you to make time to read this thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article by Kleine, Rudolph, and Zacher. Highly recommend it. We've put the link right there in the show notes for you. But if you are listening to this and you are brand new to academic research, or maybe you are just about to start your own research journey and all this terminology feels a bit dense. It can be overwhelming. Yeah. So how would we summarize what this paper actually is? Like, what is a meta-analysis in simple English? In the simplest terms, a meta-analysis is essentially a study of studies. Yeah. So rather than these researchers just going into one single office building, handing out a survey to 50 people, and publishing those results, they took a much wider lens. They zoomed out. Way out. They scoured the academic databases and gathered 73 independent studies that had already been conducted. Wow, 73. And that encompasses nearly 22,000 employees across entirely different industries, ages, and cultures. That is a massive sample size. It's huge. They took all that massive data, pooled it together, and analyzed it to find the overarching statistical truths. So they're looking for the universal patterns. Exactly. They wanted to know what universally makes people thrive at work, what universally stops them from thriving, and what happens to them and their organizations when they actually reach that state. So this paper basically maps out the entire psychological and social ecosystem of a thriving employee. That's a great way to put it, yeah. It's like panning for gold, but instead of sifting through one river, they sifted through 73 different rivers to find the universal nuggets of truth that apply to human nature itself. I love that analogy. So let's start with the definition, because thriving is one of those words that gets thrown around so casually. Oh, all the time. Yeah, it sounds like it just means being happy at work or, having a good day. Right. But the authors use a very specific psychological framework, Spreitzer and colleagues' 2005 model, to define it. It is much more nuanced than just feeling good. It is incredibly nuanced. Yeah. Because thriving is not just a synonym for happiness, and it is definitely not just job satisfaction. Okay, so what is it? According to the Spreitzer model used here, thriving requires two distinct overlapping dimensions to be present simultaneously. Simultaneously. Yeah. The first dimension is vitality. This is the hedonic component of the experience. Hedonic, like pleasure. Exactly. It means feeling physically and mentally energized, feeling alive, having that internal spark. Got it. And the second dimension? The second dimension is learning. This is the eudaimonic component, which relates to meaning and realizing your potential. Eudaimonic. Yeah. It means you are actively acquiring and applying new knowledge. You are growing. I want to pause and just sit with those two words, hedonic and eudaimonic, because I think they offer such a rich way to view our lives. They really do. Like, hedonic is about immediate pleasure or energy eating an incredible meal, feeling the rush of a good workout. That's the vitality. Right, the immediate buzz. But eudaimonic is about deep fulfillment, building something lasting, stepping into your potential. That is the learning part. Perfectly said. But what challenges my usual way of thinking is that the paper insists you must have both simultaneously to be in a state of thriving. Yes, that is the absolute core of the construct. If you strip one away, the whole state just collapses. Really? Yeah, consider what happens if you have learning without vitality. You are absorbing a lot of new information, maybe taking on a complex new software system or a promotion that stretches your skills, but you are utterly exhausted. Your battery is draining faster than it can recharge. You are growing, yes, but you are on the fast track to burnout. Oh man, I have absolutely been in that position. It feels like trying to run a marathon while holding your breath. That's exactly what it feels like. You are covering distance, but your body is just screaming for oxygen. Yep. And on the flip side, what if I have vitality, but no learning? Let's say I go to work, I drink 3 cups of coffee, I have a lot of lively chats with my colleagues, and I clear my inbox with lightning speed. Oh, so you have energy. I have tons of energy, but I haven't learned anything new in 6 months. What is that state? That state is just temporary excitement or high activation. Okay. You might have a lot of energy, but there is no forward momentum. You are not developing as a professional, and you really aren't adapting to future challenges. So it's a dead end? Kinda, yeah. It is only when those two gears lock together, when you have the energy to engage and the environment provides the friction of new learning, that you achieve the true psychological state of thriving.
I was actually trying to visualize how these two things interact. Yeah. And I keep coming back to the mechanics of a hybrid car. Oh, I like where this is going. So vitality is the electrical battery. It gives you immediate power, it gets you off the starting line, and it makes the drive feel energetic and responsive. Right. But learning is the regenerative braking system. As you encounter the friction of the road, the challenges, the stocks, the downhills, that system captures new energy from the environment and feeds it back into the battery for the long journey. Oh, wow. You need the initial energy to start, but you need the learning to sustain the trip. I think that captures the dynamic beautifully. The two dimensions feed each other in this ongoing loop. But let me push back a little here because I'm thinking about how we use the word thriving outside of the corporate world. Okay. In traditional clinical psychology, thriving is a word usually reserved for what happens after extreme trauma. Post-traumatic growth. Exactly. Someone survives a severe illness or a terrible life event, and they don't just bounce back to their baseline, they grow beyond it. They thrive because of the adversity. Right. Is that what we were talking about in this workplace context? Like, do I need to survive a brutal corporate restructuring or a toxic manager to trigger this state of thriving? The distinction you are drawing there is vital. In traditional clinical literature, thriving is often conceptualized as a dynamic process of adaptation to severe physical or psychological adversity. The phoenix rising from the ashes. Exactly. However, in the realm of organizational behavior, Spreitzer's model completely redefines the context. Okay. This model argues that thriving at work can happen with or without adversity. It is not about surviving a crisis and coming out stronger. Interesting. It is about endogenously producing resources through the everyday act of working. Endogenously producing resources. That sounds incredibly academic. Translation. Creating your own fuel from within. Yes. Generating your own psychological fuel. It means that through your daily tasks, your social interactions, and your approach to problem solving, you are actually manufacturing energy and knowledge internally. So you're not reacting to a crisis. Right. You don't need an external crisis to force you into a state of growth. You are actively shaping your environment to stimulate your own vitality and learning. That shifts the responsibility in a really empowering way. It really does. If thriving is this self-generated engine of learning and vitality, I naturally want to know what kind of person already has that engine installed. The individual traits. Yeah. Does my inherent personality dictate whether I will thrive at a random Tuesday afternoon staff meeting? The researchers dedicated a massive section to what they call individual characteristics, or the internal antecedents. Yes. When they looked at the data of these 22,000 people, what internal traits actually moved the needle? The meta-analysis analyzed several distinct individual traits, and the numbers they uncovered are quite substantial. The traits with the most powerful positive associations with thriving were psychological capital, core self-evaluations, proactive personality, and positive affect. That is a lot of psychological jargon. It is, but in the realm of psychological research, finding strong correlations here tells us that who you are deeply influences how you experience your work. Right. For instance, proactive personality had a correlation of 0.58, which is a massive signal. 0.58, wow. Let's slow down and really examine the human beings behind these statistical correlations, because these terms can feel pretty abstract. Sure. Let's start with psychological capital. It sounds like an emotional bank account that you draw from. Thinking of it as an internal reservoir is a very helpful approach. Psychological capital, often abbreviated as PsyCap in the literature, is actually a higher order construct made up of 4 specific elements: Which are? self-efficacy, optimism, hope, and resilience. Okay, let's break those down. So, self-efficacy is your deep-seated confidence in your ability to take on and master specific tasks. Hope is your perseverance toward goals, your ability to see pathways to success. Right. Optimism is your tendency to make positive attributions about your present and future. And resilience is your capacity to bounce back from setbacks or overwhelming demands. So you need all 4. The data shows, unequivocally, that people who cultivate these 4 traits are highly likely to experience thriving. It makes intuitive sense when you hold those 4 traits up against the definition of thriving we talked about. Yeah. Like if you have hope and optimism, you naturally have vitality. You have the emotional energy to show up and engage. Exactly. And if you have self-efficacy and resilience, you aren't terrified of the learning component. Because learning is risky. It is. Learning inherently implies making mistakes. If you are learning a new coding language or a new management technique,
you are going to fail initially. And if you lack resilience, making a mistake might crush your spirit and make you withdraw. But if you have high psychological capital, a mistake isn't a threat, it's just data. You adjust and keep going. That is the exact mechanism at play. It lowers the perceived risk of learning. That's brilliant. What about proactive personality? You mentioned it had a huge correlation of 0.58. Yes. I think we all know proactive people, the ones who don't wait to be told what to do, who see a problem and fix it. But why does that trait link so intensely to thriving? It comes down to how a proactive person interprets their environment, specifically how they appraise demands. Appraise demands, okay. Right, a proactive person has a stable behavioral tendency to take action to influence their surroundings. They manipulate their environment rather than just reacting to it. They're in the driver's seat. Exactly. So when they face a heavy demand at work, let's say a sudden complex project with a tight deadline, they undergo a very specific cognitive process. They don't view it as a threat. They view it as a challenge. The threat versus challenge appraisal. I've read a bit about this regarding how the amygdala processes stress. Yes. When you view a workplace demand as a threat, your body reacts with a defensive anxiety response. Fight or flight. Exactly. Your cognitive focus narrows to mere survival, and your energy is rapidly depleted by the stress hormones. You are certainly not in a state to learn. Because your brain thinks a tiger is chasing you. Right. But when you view that exact same demand as a challenge, your physiological and psychological response shifts. It stimulates vitality. Wow. The demand becomes an opportunity to acquire new knowledge or demonstrate competence. Therefore, proactive individuals are essentially transforming the friction of their jobs into their own learning opportunities, generating their own energy in the process. That is fascinating. Now, I am looking at the data from the paper regarding these internal traits, and I want to connect this back to the quote from Professor Jansair that we mentioned in the intro. The engagement critique. Yeah. He talked about critiquing the positionality of work engagement within the thriving literature. And when I look at the numbers, the correlation between work engagement and thriving is 0.64. Yes, very high. That is the highest correlation in this entire section. So if I'm playing devil's advocate, I have to ask, aren't researchers just putting a shiny new label on an old idea? How is thriving not just being highly engaged at your job? It is the most common critique leveled against the thriving construct, honestly. And understanding the difference is vital for anyone trying to apply this research. So what's the defense? Well, engagement and thriving are deeply related, hence the 0.64 correlation, but they are structurally and theoretically distinct. Okay. Work engagement is traditionally defined in the literature as a state of dedication, absorption, and vigor. It means you are deeply connected to your tasks, highly focused, and putting in a lot of effort. Which sounds great. It is great, but here is the critical difference. You can be highly engaged in your work without learning a single new thing. Okay, let me try to visualize this. Let's picture an employee. We'll call him David. Okay, David. David works on an assembly line manufacturing complex microchips. He has to be incredibly focused, totally absorbed in looking through his microscope, and he does it with a lot of vigor and energy. Right. By every psychological measure, David is absolutely engaged. But if David has been doing that exact same microscopic weld for 5 years, he isn't learning. That is a perfect illustration. David is engaged, but according to this psychological framework, he is not thriving. Because the eudaimonic piece is missing. Precisely. The eudaimonic component, the growth, the acquisition of new skills, the stretching of one's potential into unknown territory is completely missing from his day. Wow. Thriving demands that forward momentum. Engagement is a state of deep, static immersion. Thriving is a state of continuous, dynamic evolution. That makes so much sense. And the authors of this meta-analysis actually run statistical tests later in the paper to prove that thriving adds unique predictive value above and beyond just being engaged, which we will definitely explore. I can't wait to dig into that, because that distinction really changes how I look at productivity. How so? Well, it's the difference between running beautifully on a treadmill versus running through a dense forest where the terrain is always changing. Yeah, I like that. Both activities require energy, both require focus, and both will make you sweat. But only the forest run is teaching you how to navigate new obstacles, adapt your stride, and read the environment. Only one is forcing you to grow. That's exactly it. Now, we've talked about the traits that fuel this engine. What about the dark side? I mean, human nature isn't all optimism and proactivity. Unfortunately not. Yeah, I assume a highly neurotic or stressed employee can't just
proactive their way out of a bad day. Did the data show what kills the thriving engine? Yes. The primary internal drags on thriving are negative affect and perceived stress. Negative affect. Yeah, negative affect is a general dispositional tendency to experience a wide array of negative emotions like sadness, lethargy, anxiety, or anger across different situations. Like Eeyore from Winnie the Pooh. Exactly. And the mechanism of how this destroys thriving is quite profound. When you are experiencing high perceived stress, perhaps due to role ambiguity where you don't know what your boss wants from you, or just chronic work overload, you have to continuously deploy coping strategies. Right. You are spending your time managing the stress rather than managing the actual work. And psychological coping consumes massive amounts of cognitive and emotional energy. It's exhausting. It contributes to what we call allostatic load, the wear and tear on the body and brain. So your vitality is heavily drained just to keep you at a baseline level of functioning. Just to survive. Exactly. Furthermore, when you're merely trying to survive a stressful, ambiguous environment, your brain undergoes cognitive tunneling. Oh, meaning what? It shuts down the desire to explore, to take risks, or to learn. You retreat to safe, entrenched routines because learning requires vulnerability, and you cannot afford vulnerability when you feel threatened. Because making a mistake would be catastrophic. Right. So stress attacks both pillars simultaneously. It drains your vitality, and it actively discourages learning. That is so bleak, but so real. Yeah. And if we accept that these individual traits, psychological capital, proactivity, the ability to manage stress, are the internal engine of a person, we also have to acknowledge that an engine cannot run in a vacuum. Right, it needs fuel. It needs fuel, it needs oxygen, it needs the right external conditions. Like, I could be the most optimistic, resilient, proactive person on earth, but if you drop me into a deeply toxic, cutthroat corporate culture, my engine is eventually going to seize up. Without a doubt. What did the researchers find when they looked at the social ecosystem? The meta-analysis proves unequivocally that thriving is socially embedded. It does not happen in a vacuum. Okay. The paper categorizes several relational drivers, exploring how our relationships with coworkers, with leadership, and with the broader organizational culture impact our internal state. Let's look at the coworker dynamic first. Sure. The standout variable here is a concept called heedful relating, which showed a very strong positive correlation of 0.59. Heedful relating. That is such a specific, almost archaic phrase. What does that actually look like in a modern office or, on a remote team? It sounds like more than just asking someone how their weekend was on Slack. It is much deeper than casual workplace socializing. Heedful relating refers to interactions that are attentive, purposeful, conscientious, and considerate of the larger group. Purposeful interaction. Right. It happens when you're collaborating with someone and they are truly present. They are actively listening to your ideas, they are anticipating your needs in the workflow, and they are respectfully integrating your contributions into the final product. They actually care. They understand how their role interacts with yours, yes. I can feel the difference just hearing you describe it. Like when you are in a meeting or on a video call and the person you are talking to is actually tracking with your logic, they validate it, they challenge it thoughtfully, they build upon it, it physically energizes you. You hang up the call and you feel a buzz. You feel seen and competent. That physical buzz you are describing is the vitality dimension being directly triggered by social connection. Wow. Humans are deeply social creatures. Positive social integration lowers our cortisol and releases oxytocin, which frees up the prefrontal cortex. So our brains literally work better. Exactly. Yeah. And simultaneously, the learning dimension is triggered because heedful interactions create psychological safety. You can't safely transfer complex knowledge or admit what you don't know to a coworker who is guarded, hyper-competitive, or distracted. Heedful relating creates the conduit through which learning flows. I want to shift from coworkers to leadership because as I was reading the outline of this paper, I noticed a piece of data that genuinely surprised me. Let's hear it. So the researchers looked at different styles of leadership to see which ones promote thriving. We always hear about transformational leadership as the absolute gold standard in business literature. The visionary CEO. Yeah, the inspiring manager who rallies the troops with a grand, world-changing vision. But the correlation between transformational leadership and thriving was only 0.29. Correct. Meanwhile, empowering leadership was much higher at 0.44. Why would a visionary transformational leader be less effective at helping me thrive than a leader who just empowers me?
This is one of the most brilliant, subtle nuances in the organizational psychology literature, and it is crucial for managers to understand. Break it down for us. Transformational leaders are, by definition, incredibly inspiring. They provide intellectual stimulation, they speak with charisma, and they act as powerful role models. Right. But there is a well-documented psychological trap associated with transformational leadership. It can inadvertently create dependency. Dependency, meaning the team relies entirely on the leader for their emotional momentum. Precisely. In a highly transformational environment, the leader often becomes the sun, and the employees are merely planets orbiting them. Oh, what? You begin to rely on their vision to know where to go, their charisma to feel motivated, and their energy to push through obstacles. The motivation is externalized. So if they have a bad day, the whole team crashes. Yes. And when that leader leaves the room or leaves the company, the team's energy plummets. That makes sense. Empowering leaders, however, take a fundamentally different, often quieter approach. They focus on power sharing. They grant autonomy. They don't just paint a picture of a beautiful destination. They hand you the map and the keys to the vehicle. That makes profound sense when you map it back to the two pillars of thriving. If thriving requires learning and vitality, an empowering leader forces you to generate your own vitality by giving you ownership of the outcome. Exactly. They foster self-directed learning. They let you make the decisions, which inherently means you have to learn how to navigate the consequences of those decisions. You build your own psychological capital rather than borrowing theirs. Empowering leadership activates intrinsic motivation. Transformational leadership, while incredibly effective for short-term alignment or massive organizational turnarounds, often relies heavily on extrinsic inspiration. Right, it's external fuel versus internal fuel. Both have their place, but for generating that deep, sustained, self-renewing psychological state of thriving within an individual employee, autonomy and empowerment provide the necessary fertile ground. That is so insightful. Okay, let's look at the negative side of the social ecosystem. We talked about how workplace civility, basic respect, and politeness is a strong positive driver. Yes. But I was looking at the data on workplace incivility, which means dealing with rude, condescending, or toxic behavior. Right. Correlation there is surprisingly weak. It's only a negative 0.22. It is surprising. My assumption would be that a toxic coworker would instantly destroy my ability to thrive. Why doesn't an uncivil environment completely shut down the engine? It's a fascinating finding, and it speaks to a broader phenomenon in positive psychology, sometimes referred to as the positive manifold. The positive manifold. Yeah. The data suggests that thriving is a construct built primarily on the presence of positive resources, rather than solely dictated by the absence of negative ones. Unpack that for me. What does that mean for someone currently dealing with a difficult colleague? It means that if you possess high psychological capital, if you have an empowering leader who give you autonomy, and if you find genuine meaning in the tasks you are doing, your internal engine is incredibly robust. Okay. The presence of one rude coworker incivility is certainly a stressor. It's unpleasant, but it doesn't entirely dismantle your psychological framework. You can weather the storm. You might still experience a high degree of learning as you tackle your tasks, and you might still derive vitality from your other heedful relationships. The good outweighs the bad. Exactly. Thriving requires positive inputs to grow, but it is remarkably resilient to minor or localized negative inputs, provided the overall positive ecosystem is strong enough to buffer the toxicity. There is a lot of hope in that finding. It means we don't have to wait for a perfect, utopian, friction-free office environment to begin thriving. We just need to cultivate enough positive resources, internal and external, to outweigh the inevitable friction of human interaction. Perfectly summarized. So, we have built the engine with individual traits. We have placed it in a supportive, empowering social ecosystem. The employee is now officially thriving. Excellent. But let's step back and look at this from the perspective of a cynical CFO or a department head staring at a spreadsheet. The bottom line. Yeah, sectioning off resources for culture is expensive. Why should an organization care if I am thriving? What is the actual measurable return on investment for the company? Does this affect the bottom line, or is it just a nice-to-have HR initiative? The return on investment is profound, and the meta-analysis groups these organizational outcomes into three very clear, measurable buckets. Which are? Health, attitudes, and performance. Let's start with health. Good, because it is the foundational bedrock of any workforce.
The data shows a moderate positive link to subjective physical health, but where it truly shines is in mental health. Okay. There is a massive, dramatic reduction in burnout among thriving employees. The correlation between thriving and burnout is negative 0.53. A correlation of negative 0.53 is huge, so thriving acts as a literal shield against burnout. It really does. And when we calculate the raw cost of burnout to an organization, the absenteeism, the increased healthcare premiums, the catastrophic mistakes made by exhausted people, and the sheer financial cost of recruiting and training replacements for people who quit, that metric alone justifies investing heavily in an environment that creates thriving. Absolutely. The mechanisms behind this shield are fascinating too. The vitality dimension acts as a buffer against emotional exhaustion. How so? Well, when you feel internally alive and energetic, the normal daily friction of the workday doesn't deplete your reserves in the same way. It's like having a thicker emotional armor. You just bounce back faster. Right. And the learning dimension is equally protective. Because you are constantly acquiring new knowledge, you are continuously updating your ability to cope with changing work demands. Right. If you never learn, the introduction of a new software system is a crisis that spikes your cortisol and causes burnout. But if you are a continuous learner, that same software system is just a puzzle to solve. You have the tools to adapt. That adaptability leads perfectly into the second bucket, attitudes. The data shows that for a thriving employee, job satisfaction and organizational commitment absolutely soar. Off the charts. The correlations are 0.64 and 0.65 respectively, and logically, as those go up, turnover and tensions plummet. Naturally. It makes perfect sense. If I am in an environment where my energy battery is constantly being recharged and my brain is constantly being fed with new interesting challenges, why would I ever leave? Exactly. It'd be foolish to take my talents elsewhere and risk losing that ecosystem. Thriving is arguably the ultimate retention tool. You aren't keeping people with golden handcuffs. You are keeping them because the environment itself is fulfilling. That's a great way to put it. But the third bucket, performance, is where leadership really needs to pay close attention. Okay, let's hear the performance data. The study looked at task performance, which is just doing your core job well, and organizational citizenship behavior, which means going above and beyond to help colleagues or the company. Both of those metrics rise significantly. But the strongest performance link of all, the absolute peak outcome, is creative performance, showing a correlation of 0.58. This specific point about creative performance requires a real paradigm shift for traditional management. Huge shift. In many older corporate cultures, we view learning as taking time away from producing. I can easily imagine a stressed-out middle manager seeing an employee reading an industry article or taking an hour to experiment with a new tool and saying, "Start reading and get back to processing those client tickets. We have weekly quotas to hit." Oh, that happens every day. But this data proves that learning is the very mechanism that fuels higher-level performance. It feels like a manager telling an employee to stop updating their phone's operating system because they need them to make a call right this second. That is a brilliant analogy. Yes, the update requires 20 minutes of downtime where the phone is useless. But without that continuous learning, without that OS update, eventually the phone can't run the new complex apps required to do the job at all. Learning expands the capacity of the worker. That is a highly accurate way to conceptualize it. Creative performance requires two distinct ingredients: the cognitive expertise to recognize what needs to change, and the emotional energy to actually push that change through the system. And thriving gives you both. Exactly. When you are updating your internal OS, you are gathering the raw materials for innovation. You begin to see patterns and connections that your non-learning peers miss. You figure out a faster way to process those client tickets. But having a brilliant idea isn't enough, is it? No, because implementing a new idea in any established organization is inherently difficult. It meets bureaucratic resistance. It requires championing. It requires explaining it to skeptics. And that is exactly where the vitality dimension becomes critical. You've got it. If you have the brilliant idea, but you are emotionally exhausted, you will likely just keep it to yourself. You'll think, it's too much effort to fight the bureaucracy to change this process. I'll just do it the old, slow way. We've all been there. But if you have the idea and you possess high vitality, you have the physical and mental stamina to push past the resistance that usually kills innovation in its cradle.
That is why the unique combination of learning and vitality is the ultimate engine for creative performance. It genuinely makes you wonder how many billion-dollar ideas or massive cost-saving process improvements are sitting silently inside the heads of employees right now. Probably thousands. Employees who have the knowledge to see the solution, but are simply too drained by a toxic or unsupportive environment to speak up. It's a tragedy of wasted potential. The data makes an ironclad case that thriving is incredible for everyone involved. It protects the individual's health, and it drives the company's bottom line. But this brings me to a question of demographics. Okay. Does thriving look the same and produce the same results for a 24-year-old junior analyst fresh out of university as it does for a 60-year-old senior executive nearing retirement? This is where the researchers conducted some highly illuminating exploratory analyses on demographic variables. What did they find? First, they looked at the raw numbers. They found that a person's age is generally unrelated to their overall level of thriving or their capacity for learning. People don't stop learning just because they age. Right. However, they found that age is positively related to vitality. Wait, really? Yeah. The data showed that older workers reported higher levels of internal vitality and energy than younger workers. That feels entirely counterintuitive to the cultural stereotypes we hold about aging and energy levels. It challenges the physical stereotypes, certainly, but it aligns beautifully with lifespan development psychology. How so? As people age, they generally develop far superior emotional regulation strategies. They have a stronger, more stable sense of self. They know what matters. So they don't sweat the small stuff. Exactly. Consequently, they're much less affected by the minor daily workplace anxieties, the office politics, the minor criticisms that can severely drain a younger, less secure worker's emotional energy. That makes total sense. But the most crucial finding regarding age wasn't just about baseline vitality. It was a moderation effect. A moderation effect. Let's make sure we define that statistical term clearly for the listener. In statistics, a moderation effect means that a third variable, in this case the employee's age, changes the strength of the relationship between two other variables. Okay. The researchers found that age modulates the link between thriving and task performance. Specifically, the positive association between thriving and actually doing your job exceptionally well is stronger for older employees than it is for younger employees. Let me make sure I'm wrapping my head around the practical application of this. Sure. Suppose I am managing two employees. Both are currently thriving. Both are scoring a 9 out of 10 on vitality and learning. One is 28 years old and one is 58 years old. You are saying that the 58-year-old's state of thriving will translate into a higher measurable boost in their immediate task performance than the 28-year-old's. According to the data, yes. Why would that be? It points directly to a well-researched psychological framework called socio-emotional selectivity theory, which deals with the profound difference between extrinsic and intrinsic motivation across our lifespans. Okay, walk me through that. Younger workers are often, by necessity, driven heavily by extrinsic factors. They're trying to build a resume, secure promotions, negotiate higher salaries, and establish their professional identity in the world. Right, they're hungry. When a younger worker is thriving, they have a lot of energy and they are learning rapidly, but a significant portion of that energy is dispersed outward into networking, long-term career planning, or managing upward. They are playing the long game. Their focus is distributed across the horizon of their career. Precisely. But older workers generally experience a psychological shift toward intrinsic motivation. The horizon is closer. They have already built their resumes. They have established who they are. So they don't have to prove themselves anymore. Exactly. Therefore, they tend to prioritize doing meaningful, high-quality work in the present moment over chasing the next distant promotion. So when an older worker is thriving, when they feel energized and are continuously learning, they pour that cognitive and emotional energy directly into the deep, high-quality execution of their immediate tasks. Wow. Their thriving is laser-focused on the work itself right in front of them. That is a phenomenal insight for talent management and organizational design. It completely shatters the ageist bias that investing in training, upskilling, or learning programs for older employees yields a lower return on investment because they have fewer years left at the company. It completely refutes it. The data says the exact opposite. When you invest in helping an older worker thrive,
They give the value of that thriving right back to the specific tasks at hand, resulting in superior performance. It's a huge win for the organization. Now, earlier in our conversation, we talked about the skepticism some might have about thriving just being a fancy academic word for happiness or engagement. Right, the giant's air critique. Exactly. You mentioned the researchers did complex statistical tests to prove its unique independent value. The literature calls this relative weights analyses to establish incremental predictive validity. That's the technical term, yeah. Can we translate those heavy statistical terms into a clear conceptual framework for our listener? How did they prove thriving isn't just happiness in a suit? Absolutely. Think of incremental predictive validity like trying to bake the perfect cake, and you are trying to predict how good it will taste based on the ingredients. Okay, I like baking analogies. In the kitchen of organizational psychology, we already have a standard recipe. We have known for decades that being happy, which we measure as positive affect, and being engaged, work engagement, are fantastic predictors of whether someone will perform well and be satisfied with their job. They are the flour and the sugar of our recipe. They form a solid base. Right. It's not groundbreaking to say that happy, busy people are generally good employees. Exactly. So the researchers posed a challenge. If we introduce this new conceptual ingredient called thriving, this very specific interlocking combination of learning and vitality, does it make our prediction of employee success better? Does it improve the cake? Does it add anything new to the final outcome that the flour and sugar didn't already provide? The relative weights analyses proved mathematically that yes, it does. By how much? Even if you completely control for how generally happy someone is, and even if you account for how deeply engaged they are in their tasks, knowing whether they are thriving allows you to predict an additional 11% of their job satisfaction. 11% is significant. It is. It accounts for a unique additional reduction in burnout that happiness alone cannot explain. So if happiness and engagement are the flour and sugar, thriving is the yeast. Perfect. It provides a structural lift, a transformative difference to the final outcome that you simply cannot get just by making an employee smile or keeping them heavily occupied with tasks. Exactly right. It proves that there is a unique magic, a specific psychological alchemy that occurs when you combine the physical feeling of being alive with the cognitive act of acquiring new knowledge. Pure happiness lacks that forward trajectory. Engagement lacks that expansion of capacity. That is a brilliant way to synthesize it. That mathematical proof of incremental validity is what cements thriving as a crucial, independent construct in the scientific literature. It is not a passing corporate buzzword. It is a distinct, measurable psychological state with unique organizational consequences. Which naturally brings us to the horizon of this topic. For the listener out there who is deeply curious, or perhaps a grad student, a PhD candidate, or an organizational leader looking to the future, where does this literature go next? The blind spots. Yeah, a meta-analysis is essentially a comprehensive look backward at everything we have done so far. What are the blind spots, the unanswered questions that Kleine, Rudolph, and Zacher identified in the 2019 data? The most glaring limitation they noted across the literature is the heavy reliance on cross-sectional data. Cross-sectional data, meaning what exactly? Meaning most of the 73 studies they analyzed were snapshots in time. A researcher gives a survey to a hospital staff on a Tuesday and asks, are you experiencing empowering leadership? Are you thriving? Are you performing well? Right. They analyze the answers and find a strong correlation. But a snapshot is not a video. It doesn't show us how these human dynamics unfold, interact, and change over months or years. You don't see the movie. Right. We desperately need longitudinal studies, following the same employees over time, to see the actual causal arrows. For instance, does empowering leadership definitively cause thriving a month later? Or is it possible that employees who are already naturally thriving elicit more empowering behaviors from their bosses because they are viewed as highly competent? The classic chicken and egg problem of correlation versus causation. Exactly. To really build better organizations, we need to know which lever to pull first. What else did they identify? I saw a note in the literature regarding something called polynomial regression in relation to the balance of vitality and learning. This sounds deeply nerdy, and I am entirely here for it. It is wonderfully nerdy. How does that work? It solves a very practical problem. Remember, the core definition of thriving requires the joint experience of high vitality and high learning. Right, both together. However, in almost all the studies analyzed, researchers simply took a person's vitality score
added it to their learning score, and averaged the two to get a total thriving score. But averaging mathematical scores hides the psychological nuance. Give me a practical example of how an average hides the truth of an employee's experience. Okay, imagine an employee who scores a 9 out of 10 on vitality. They are highly caffeinated, highly social, and vibrating with energy. Sounds like me on a Monday morning. But they score a 1 out of 10 on learning because they are doing mindless, deeply repetitive administrative work. Their average score is a 5. Okay. Now imagine another employee in a different department who scores a 5 on vitality and a 5 on learning. Right. They both look like a 5 on the HR spreadsheet. Yeah. They both look completely average. But their internal psychological states are wildly different. Oh. The first person is highly imbalanced. They have massive energy, but no outlet for growth, which will likely lead to severe frustration or disruptive behavior. The second person is perfectly balanced, just operating at a moderate level. Oh, that is a massive blind spot. If an organization just looks at the average, they might put both of those employees in the same management bucket when they need entirely different interventions. Exactly. The first person needs a harder project. The second person might just need more sleep. How do future researchers fix that mathematical blending? By utilizing polynomial regression and response surface analysis. It is an advanced statistical technique that allows you to map these mismatched psychological profiles on a three-dimensional graph. Three-dimensional? Yeah. Instead of a flat line, you get a topographic map. It lets researchers see exactly what happens to an employee's performance or burnout levels when their vitality is vastly outpacing their learning, or vice versa. It treats the dimensions as independent forces interacting in 3D space, rather than just mushing them together into a flat average. It's like checking the alignment of the individual tires on our hybrid car, rather than just looking at the overall speedometer. If one tire is fully inflated and the other is flat, the car is going to veer off the road, even if the average tire pressure looks okay. That is a perfect extension of the hybrid car analogy. What about the social and environmental aspects? We talked extensively about how thriving is socially embedded through heedful relating and leadership. But can thriving exist as a collective property? Oh, team thriving. Yeah, I think of it like a choir. Can one person in a choir be truly thriving if everyone else is singing off-key, exhausted, and burning out? Or is thriving inherently contagious? Team thriving is a major, exciting frontier for future research. The paper touches on this potential. Can an entire unit, an emergency room staff, or a corporate department possess a shared collective climate of thriving? And what's the consensus? Some preliminary studies in the broader literature suggest that yes, thriving can emerge as a shared group property through emotional contagion and shared learning practices. But we need to understand the mechanics of that contagion. Right. How quickly does a newly hired, highly thriving leader impact a depleted, cynical team? Conversely, how does a toxic, burnt-out team drain the vitality of a thriving newcomer? We need to understand the immune system of the group. And what about the daily fluctuations within an individual? We've talked about thriving like it's a permanent trait once you achieve it, but human energy isn't static. Does my capacity to thrive change from Monday morning to Friday afternoon? The authors point to a brilliant diary study by Neeson and colleagues from 2012 that offers a massive clue for how we should design work. A diary study? Yeah, a diary study asks people to record their feelings every day. They found that the vitality component fluctuates wildly on a daily basis. Makes sense. You might have high vitality on a Tuesday after a great night's sleep and a good workout, and incredibly low vitality on a Friday afternoon after a string of tough meetings. However, the learning component is much more stable. Really? Yes. Learning doesn't fluctuate day to day. It is tied to the fundamental structural design of your job and your general disposition toward growth. Let's sit with that, because that is a profound insight for anyone in leadership or organizational design. It means you cannot fix a stagnant, non-thriving workforce simply by offering free espresso, putting a ping-pong table in the break room, or hosting a Friday afternoon wellness seminar. No, you can't. Those things might briefly spike vitality for a few hours, but if the job itself isn't structurally designed to provide stable, ongoing autonomy and learning opportunities, that vitality has nowhere to go. It will just evaporate. You have charged the battery, but you haven't connected it to a motor. You've hit the nail on the head. Cultivating thriving requires deep structural changes to how work is delegated, how autonomy is granted, how failure is handled, and how psychological safety is maintained over the long term. This has been an incredibly illuminating journey through the depths of organizational psychology. Let's distill all of this complexity down into our final actionable takeaways. This is good.
For the academics, the researchers, and the students listening, this meta-analysis is a clarion call. It solidifies the web of related concepts around thriving. It proves mathematically that this construct is wholly distinct from simple engagement and positive affect. Absolutely. But it also highlights an urgent, exciting need for you to step into the gaps. We need you to design longitudinal studies to track these variables over time. We need you to utilize polynomial regression to map the imbalances between vitality and learning. And we need you to start measuring thriving at the team and organizational level to understand emotional contagion. There is so much rich, unexplored territory left to map. For the practitioners, the managers, the directors, the founders, and anyone who leads human beings, the takeaway is equally clear and perhaps more urgent. What's the bottom line for them? Thriving cannot be mandated. You cannot send a company-wide email demanding that your employees feel alive and acquire new skills by Friday. As much as some managers might want to. Right? Thriving must be cultivated like a garden. You have to intentionally build an ecosystem of trust. You must empower your employees by handing them the keys, rather than just trying to inspire them with grand visions while keeping all the control. Yeah. And perhaps most importantly, you must fundamentally reframe how you view development. Giving your employees the time, space, and safety to learn is not a luxury perk. It is not time stolen from productivity. It is the fundamental, vital engine of creative performance, employee retention, and mental health. It is the stark difference between an organization that is slowly, inevitably burning itself out and an organization that is continuously generating its own renewable energy. Very well said. Which brings us to our final provocative thought for you, our listener, to mull over as you transition back into your day. We spend so much of our professional lives trying to eliminate the stressors. We desperately hope that if we can just get the inbox to zero, if we can just finish this one grueling project, if we can just survive until Friday, then we will finally feel okay. We treat work like a survival exercise. Exactly, holding our breath until the weekend. But this research fundamentally shifts the paradigm. It proves that thriving isn't simply the absence of stress, and it isn't just surviving the avalanche. It is the active, deliberate presence of learning and energy. It's about changing the equation entirely. So I want you to look at your own calendar for tomorrow. Look at the meetings, the blocked out work sessions, the endless obligations. Are you just scheduling tasks to survive the day, or have you intentionally protected time to learn something entirely new? Have you carved out space for a heedful, truly present interaction with a colleague that will spark your vitality? You are the architect of your own internal engine. What would it take, starting tomorrow morning, to shift just 10% of your week from merely surviving to truly thriving? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। প্রত্যেকটা অফিসেই বা যে কোনো কর্মক্ষেত্রে এমন একজন মানুষের দেখা কিন্তু মেলেই, যাকে দেখলে মনে হয় পাহাড় সম কাজের চাপের নিচে একেবারে চাপা পড়ে আছেন, অথচ অদ্ভুতভাবে তার মধ্যে সবসময় একটা দারুণ প্রাণশক্তি কাজ করে। হ্যাঁ, মানে সারাক্ষণ বিরতিহীনভাবে কাজ তো করছেনই, আবার নতুন কোনো সফটওয়্যার বা নতুন কোনো পদ্ধতি শেখার কথা উঠলেই সবার আগে তার উৎসাহ দেখা যায়। একদম। আর সাধারণ চোখে দেখলে অনেকেই হয়তো ভাবেন যেটা বোধহয় তার জন্মগত কোনো বৈশিষ্ট্য, অথবা তিনি হয়তো এমন কোনো জাদুকরী এনার্জি ড্রিঙ্ক পান করেন যেটা অন্যদের একদম অজানা। অনেকেই সেটা ভাবতে পারেন, কিন্তু এই ঘটনার পেছনে আসলে একদম সুনির্দিষ্ট আর শক্তিশালী কিছু বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। মনস্তত্ত্ব আর কর্মপরিবেশের চমৎকার একটা মেলবন্ধন কাজ করে এখানে। রাইট। আর আজকে আমরা ঠিক এই জাদুকরী মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাটারই ব্যবচ্ছেদ করব। আমাদের এই গভীর আলোচনার ভিত্তি হচ্ছে জার্নাল অফ অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার, জার্নালে প্রকাশিত অত্যন্ত যুগান্তকারী একটি গবেষণা। এটা কিন্তু একাডেমিক দুনিয়ায় একেবারে প্রথম সারির একটা জার্নাল, যাকে আমরা একাডেমিক ভাষায় ABDC-A স্টার রেটেড জার্নাল বলে থাকি। হ্যাঁ, আর এই চমৎকার পেপারটি তৈরি করেছেন প্রখ্যাত গবেষক অ্যান-ক্যাথরিন ক্লাইনে, কর্ট W রুডলফ এবং হানেজ জ্যাকার।
ঠিক, আর তারা সাধারণ কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নন। লাইপজিগ ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ গ্রোনিংেন আর সেন্ট লুইস ইউনিভার্সিটির মতো স্বনামধন্য সব প্রতিষ্ঠানের সাথে তারা কাজ করছেন। যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে একেবারে নতুন, মানে সবেমাত্র নিজেদের গবেষণার পথ চলা শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য একটু সহজে বলে রাখা ভালো যে এটি কিন্তু কোনো একক গবেষণা নয়। আচ্ছা, এটি আসলে একটা মেটা অ্যানালাইসিস। মানে গবেষকরা এখানে আগে হওয়া ৭৩টি ভিন্ন ভিন্ন গবেষণার ডেটা একত্রিত করেছেন, আর সেখানে সব মিলিয়ে যুক্ত ছিলেন প্রায় ২১,৭৩৯ জন কর্মী। ও ওয়াও, ২১,০০০-এরও বেশি। এত বিশাল সংখ্যক মানুষের ডেটা যখন একসাথে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন কর্মক্ষেত্রের এমন অনেক লুকানো প্যাটার্ন বা নকশা বেরিয়ে আসে যা সাধারণ পর্যবেক্ষণে কখনোই ধরা পড়ে না। একদম ঠিক বলেছেন। আর আলোচনার গভীরে যাওয়ার আগে একটা বিশেষ ঘোষণা দিয়ে রাখি। ২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকে, মানে এই মাস থেকেই, আমরা কিন্তু সপ্তাহে ২টো করে পর্ব নিয়ে আসছি। প্রতি রোববার আর সোমবার। রোববারের পর্বগুলোতে আমরা মূলত কোনো ক্লাসিক পেপার বা বইয়ের রিভিউ নিয়ে আসি, আর সোমবারের পর্বগুলোতে ফোকাস থাকে একেবারে শীর্ষস্থানীয় পেয়ার রিভিউড জার্নালের সাম্প্রতিক প্রকাশনাগুলোর উপর। রাইট। যারা বিশ্বস্ত সাবস্ক্রাইবার হিসেবে নিয়মিত আমাদের এই উদ্যোগকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তবে এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা হলো এই যে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সহায়তায় তৈরি যেসব পডকাস্ট রয়েছে, সেগুলোর ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারগুলো প্রচুর পরিমাণে পানি ব্যবহার করে, যেটা আসলে আমাদের প্রকৃতি আর জলবায়ুর উপর একটা বিশাল চাপ ফেলে দেয়। তাই সপ্তাহে পর্ব রিলিজ সীমিত করাটা মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে উদ্যোগগুলোতে আমাদের একটা ছোট্ট অবদান। একদম। আমরা চেয়েছি পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল থাকতে, আবার একই সাথে আলোচনার গুণগত মান বা গভীরতা যাতে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয় সেটাও নিশ্চিত করতে। ঠিক। যেমন ধরুন, আগামীকালের পর্বের জন্যই আমরা জার্নাল অফ অকুপেশনাল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি থেকে একটা সাম্প্রতিক পেপার নিয়ে আলোচনার পরিকল্পনা করেছি। ওটাও কিন্তু আরেকটা ABDC-A স্টার জার্নাল। হ্যাঁ, আর পেপারটা লিখেছেন ইউনিভার্সিটি অফ সারির প্রফেসর জ্ঞান সারি এবং তার সহগবেষক দল। মজার ব্যাপার হলো তারা মূলত আজকের এই কন্টেম্পোরারি ক্লাসিক পেপারটি দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সত্যিই দারুণ। প্রফেসর জ্ঞান সারে কিন্তু নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করে বলেছেন যে দ্য মেটা অ্যানালাইটিক স্টাডি বাই ক্লেইন, রুডলফ অ্যান্ড জ্যাকার 2019 gave us the opportunity to critique the positionality of the engagement construct within the thriving literature. মানে এই পেপারটার ইম্প্যাক্ট কতটা গভীর সেটা এই কথা থেকেই বোঝা যায়। তাই শ্রোতাদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ থাকবে একটু সময় বের করে যত্ন সহকারে তৈরি এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া এই আর্টিকেলটি পড়ার জন্য। পেপারের লিঙ্ক শো নোটে দেওয়া আছে। তো এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। এই যে আমরা থ্রাইভিং অ্যাট ওয়ার্ক বা কর্মক্ষেত্রে সমৃদ্ধি নিয়ে কথা বলছি, এটা আসলে কি? স্প্রাইট স্যার এবং তার সহকর্মীদের ২০০৫ সালের বিখ্যাত একটা মডেল আছে। সেই মডেল অনুযায়ী থ্রাইভিং মানে কিন্তু শুধু মানসিক চাপ কমানো বা কোনো মতে টিকে থাকা নয়। রাইট। এটি মূলত দুটো জিনিসের একটা যৌথ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা। প্রথমটা হলো ভাইটালিটি বা প্রাণশক্তি, মানে কাজের মধ্যে নিজেকে সজীব আর উদ্যমী অনুভব করা, আর দ্বিতীয়টা হলো লার্নিং বা শিখন, অর্থাৎ প্রতিনিয়ত নতুন জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করার যে অনুভূতি, সেটা। একদম তাই। আর এই দুটোর যে কোনো একটি ছাড়া কিন্তু সম্পূর্ণ থ্রাইভিং সম্ভব নয়। মানে বিষয়টা আমার কাছে অনেকটা স্মার্টফোনের মতো মনে হচ্ছে। ধরুন, ভাইটালিটি হলো ফোনের ব্যাটারি লাইফ, আর লার্নিং হলো সফটওয়্যার আপডেট। চমৎকার একটা রূপক। হ্যাঁ, ঠিক তাই। মানে যদি ফোনে ১০০% চার্জ থাকে কিন্তু সফটওয়্যার আপডেট না করা হয়, তাহলে তো ফোনটা একসময় পুরনো হয়ে যাবে, নতুন অ্যাপগুলো আর চলবে না। আবার লেটেস্ট সফটওয়্যার আপডেট থাকলেও যদি ব্যাটারি মাত্র 2% থাকে, তাহলে ফোনটা কোনো কাজে আসবে না। এক্স্যাক্টলি। দুটো জিনিস একসাথে থাকলেই একটা স্মার্টফোন যেমন সেরা পারফরমেন্স দিতে পারে, মানুষের ব্রেনের মেকানিজমটাও কিন্তু ঠিক সেরকমই। কিন্তু এখানেই আমার একটা খটকা লাগছে। কর্পোরেট জগতে তো ওয়ার্ক এনগেজমেন্ট বা কাজে সম্পৃক্ততা বলে খুব জনপ্রিয় একটা শব্দ আছে। এই থ্রাইভিং কি সাধারণ এনগেজমেন্ট বা পজিটিভ এফেক্ট থেকে খুব আলাদা কিছু? মানে যে কর্মী কাজে মগ্ন বা এনগেজড, সেই তো থ্রাইভ করছে, তাই না? অ্যানালাইসিসের ডেটা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রমাণ করেছে যে এগুলো সম্পূর্ণ আলাদা। আচ্ছা।
গবেষণার ভাষায় থ্রাইভিংয়ের নিজস্ব একটা ইনক্রিমেন্টাল প্রেডিক্টিভ ভ্যালিডিটি রয়েছে। সহজ কথায় কোনো কর্মী শুধু কাজে মগ্ন থাকলেই হবে না, তার মধ্যে নতুন কিছু শেখার অনুভূতি আর সজীবতা একত্রে কাজ করলে তবেই তার কাজের মান বা জব স্যাটিসফ্যাকশন বহুগুণ বেড়ে যায়। বুঝতে পারছি, মানে এনগেজমেন্টের বাইরেও পারফরম্যান্সের এমন কিছু দিক আছে যেটা শুধু থ্রাইভিং দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ঠিক তাই। তো যেহেতু থ্রাইভিং একটা আলাদা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই অবস্থাটি আসলে তৈরি হয় কিভাবে? এর বীজ কোথায় লুকিয়ে আছে? পেপারে এই উৎসগুলোকে মূলত দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আর সম্পর্ক ভিত্তিক বা পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য। আচ্ছা, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কি পড়ছে? ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গবেষণায় দেখা গেছে সাইকোলজিক্যাল ক্যাপিটাল বা মানসিক মূলধন খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানে একজন মানুষের আশাবাদী হওয়ার ক্ষমতা বা ঘুরে দাঁড়ানোর মানসিকতা। যারা প্রোঅ্যাক্টিভ পার্সোনালিটির অধিকারী এবং যাদের পজিটিভ এফেক্ট আছে, তাদের মধ্যে থ্রাইভিং বেশি দেখা যায়। আর নেতিবাচক আবেগ বা স্ট্রেস থাকলে নিশ্চয়ই সেটা থ্রাইভিং কমিয়ে দেয়। হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবেই নেতিবাচক আবেগ এটাকে একেবারেই কমিয়ে দেয়। দাঁড়ান, এখানেই একটু চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চাই। ধরুন কোনো একজন মানুষ স্বভাবগতভাবেই একটু নেতিবাচক চিন্তা করতে অভ্যস্ত, সাইকোলজির ভাষায় যার নেগেটিভ এফেক্ট বেশি, অথবা সে নিজে থেকে হয়তো খুব একটা প্রোঅ্যাক্টিভ নয়, তাহলে কি সে কখনোই থ্রাইভিং অনুভব করবে না? নাকি অফিসে একজন দুর্দান্ত বস বা সাপোর্টিভ লিডারশিপ তাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে? আপনার এই যুক্তিটা পেপারের অন্যতম চমকপ্রদ একটা ফাইন্ডিংয়ের সাথে মিলে যায়। ডেটার সাহায্যে গবেষকরা প্রমাণ করেছেন যে সম্পর্কভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে আক্ষরিক অর্থে গেম চেঞ্জার। ওহ, তাই নাকি? একদম। বিশেষ করে লিডার মেম্বার এক্সচেঞ্জ বা এলএমএক্স, মানে বসের সাথে কর্মীর আস্থার সম্পর্ক, এখানে কোরিলেশন পাওয়া গেছে 0.61। আর পারসিভড অর্গানাইজেশনাল সাপোর্ট বা প্রতিষ্ঠানের সমর্থনের ক্ষেত্রে কোরিলেশন হল 0.63। এগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। ওয়াও! তার মানে নিজের স্বভাব যেমনই হোক না কেন, প্রতিষ্ঠান যদি পাশে থাকে তাহলে থ্রাইভ করা সম্ভব। হ্যাঁ, কারণ এই সাপোর্টগুলো একজন কর্মীর ভেতরে মানসিক নিরাপত্তা তৈরি করে। বসের সাথে আস্থার সম্পর্ক থাকলে একজন নেতিবাচক স্বভাবের মানুষও কিন্তু নতুন কিছু শেখার ঝুঁকি নিতে পারে, আর শিখতে শুরু করলেই তার ভেতর প্রাণশক্তি ফিরে আসে। মানে সহকর্মীদের সমর্থন আর পারস্পরিক আস্থাও এখানে জাদুর মতো কাজ করে বলতে পারি। ঠিক তাই। কর্মক্ষেত্রের সম্পর্কগুলো যে কোনো কর্মীকে প্রাণশক্তিতে ভরিয়ে তুলতে দারুণভাবে সাহায্য করে। তো কর্মক্ষেত্রে থ্রাইভিং কিভাবে তৈরি হয় সেটা তো জানা গেল, কিন্তু দিন শেষে প্রতিষ্ঠান আর কর্মী নিজে এর থেকে কি সুফল পায়? আউটকাম বা ইম্প্যাক্টগুলো কি কি? যাকে সাবজেক্টিভ হেলথ বলে, আর বার্নআউট বা মানসিক ক্লান্তি মারাত্মকভাবে কমিয়ে দেয়। এর কোরিলেশন -0.53। -0.53, মানে থ্রাইভিং বাড়লে বার্নআউট একেবারে হুড়োমুড় করে কমে যায়। আর কাজের প্রতি মনোভাব বা অ্যাটিটিউডের ক্ষেত্রে? কর্মীদের কাজের প্রতি সন্তুষ্টি বা জব স্যাটিসফ্যাকশন আর প্রতিষ্ঠানের প্রতি কমিটমেন্ট বাড়ে, আর স্বাভাবিকভাবেই চাকরি ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা অনেকটাই কমে যায়। আর পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে শুধু প্রাত্যহিক কাজগুলোই কি ভালো হয়? না, শুধু রেগুলার টাস্ক পারফরমেন্সই নয়, সৃজনশীল পারফরমেন্স আর অর্গানাইজেশনাল সিটিজেনশিপ বিহেভিয়ারের ক্ষেত্রেও থ্রাইভিং খুব বড় একটা ভূমিকা রাখে। তবে এই গবেষণার সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্যটা হচ্ছে বয়স নিয়ে। হ্যাঁ, মডারেটর হিসেবে বয়সের প্রভাব, রাইট? প্রভাবিত বা মডারেট করে। সহজ কথায় বয়স্ক কর্মীদের ক্ষেত্রে থ্রাইভিং পারফরমেন্সে আরও অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। মানে এটা শুনে তো আমি আসলেই তীব্র বিস্ময় প্রকাশ করছি। আমাদের সমাজে তো একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে তরুণ কর্মীরাই সবচেয়ে বেশি এনার্জেটিক আর পারফর্মিং হয়। সেটাই তো সবাই ভাবে। কিন্তু এই ডেটা তো বলছে বয়স্ক কর্মীরা থ্রাইভিং থেকে বেশি ফায়দা নিচ্ছেন। এটা কি আমাদের ওই প্রচলিত ধারণার গালে একেবারে একটা চড় নয়? শুধু চর নয়, এটা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করে যে ওই স্টেরিওটাইপটা ভুল। এর কারণটা খুব সহজ। বয়স্ক কর্মীদের কাছে অভিজ্ঞতার এক বিশাল ভাণ্ডার থাকে, রাইট?
তাই যখন তারা নতুন কিছু শেখার এবং প্রাণবন্ত থাকার সুযোগ পান, অর্থাৎ থ্রাইভ করেন, তখন তারা ওই দীর্ঘদিনের জমানো অভিজ্ঞতাকে অনেক বেশি কার্যকরভাবে পারফরমেন্সে রূপান্তর করতে পারেন। তরুণদের ক্ষেত্রে যেটা হয়তো শুধু কাঁচা এনার্জি, বয়স্কদের ক্ষেত্রে সেটা এনার্জি আর অভিজ্ঞতার একটা মারাত্মক সংমিশ্রণ। এটা সত্যি চোখ খুলে দেওয়ার মতো একটা বিশ্লেষণ। তত্ত্ব থেকে শুরু করে থ্রাইভিংয়ের বাস্তব প্রয়োগ পর্যন্ত চমৎকারী যাত্রা। মূল সারাংশ যদি টানতে চাই, তাহলে একাডেমিক আর প্র্যাকটিশনারদের জন্য মূল শিখন বা কি টেকওয়েগুলো কি দাঁড়ায়? একাডেমিকদের জন্য এই পেপারটি থ্রাইভিংয়ের তাত্ত্বিক মডেলকে আরও বিস্তৃত করেছে আর প্রমাণ করেছে যে এটি কাজের অন্যান্য ইতিবাচক অবস্থার চেয়ে আসলেই আলাদা। আর প্র্যাকটিশনার বা ম্যানেজারদের জন্য কি বার্তা থাকছে? ম্যানেজারদের বুঝতে হবে যে শুধু কাজের চাপ কমালেই হবে না, বরং প্রতিষ্ঠানে এমন একটা সংস্কৃতি গড়তে হবে যেখানে কর্মীরা সমর্থন পান। ওই যে এলএমএক্স আর অর্গানাইজেশনাল সাপোর্টের কথা বললাম, সেগুলো নিশ্চিত করতে হবে। এটা শুধু কর্মীদের বার্নআউটই কমাবে না, বরং তাদের সৃজনশীলতা ও পারফরম্যান্সকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। আসলেই গভীরভাবে ভাবার মতো বিষয়। তবে গবেষণার একটা মজার দিক হলো, আজকের এই আলোচনার একেবারে শেষে এসেও মনের মধ্যে একটা গভীর কৌতূহল কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। যেমন এই বর্তমান গবেষণাগুলো মূলত একক কর্মীর ওপর ফোকাস করেছে। হ্যাঁ, মানে একজন কর্মী ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে থ্রাইভ করছেন। রাইট, কিন্তু যদি পুরো একটা টিম বা দল একসাথে থ্রাইভ করে, তবে তার সম্মিলিত ইম্প্যাক্ট বা প্রভাব প্রতিষ্ঠানের ওপর কেমন হবে? এগুলো সত্যি ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য খুব চমৎকার কিছু প্রশ্ন। আবার আরেকটা ব্যাপার, এই থ্রাইভিং কি এমন কোনো বিষয় যা সময়ের সাথে প্রতিদিন বদলায়, নাকি এটি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা একটা স্থায়ী বৈশিষ্ট্য? হ্যাঁ, স্টেট নাকি ট্রেড, এটা নিয়ে ভাবার অনেক সুযোগ রয়েছে। এগুলো থেকে গবেষণার নতুন নতুন দিক নির্দেশনা তৈরি হতে পারে। একদম। আর এই ভাবনার রেশ ধরে এই পর্বটি শেষ করার আগে একটু নিজেদের চারপাশের কর্মপরিবেশ নিয়ে ভাবার আহ্বান জানাচ্ছি। কর্মক্ষেত্রটি কি আসলেই এমন কোনো জায়গা যেখানে প্রতিনিয়ত নিজেদের ওই সফটওয়্যার আপডেট করা যায় আর ব্যাটারি ফুল চার্জ রাখা যায়? অত্যন্ত প্রশান্তিদায়ক এই ভাবনার সাথে সবাইকে আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। हाँ, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे कर्मचारी की जो सोमवार की सुबह जब उसका अलार्म बजता है ना जी, तो वो थका हुआ या चिड़चिड़ा महसूस नहीं करता। हाँ, जो कि आजकल बहुत ही दुर्लभ है। बिल्कुल, बल्कि वो पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ है। वो काम पर जाने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए सच में बहुत उत्सुक है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उसने वीकेंड पे बहुत अच्छी नींद ले ली इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। सही कहा। शिक्षाविदों और मनोविज्ञान की भाषा में ना इस बहुत ही सकारात्मक मनोवैज्ञानिक अवस्था को थ्राइविंग कहा जाता है। मतलब एक ऐसी अवस्था जहां काम सिर्फ तनाव का कारण नहीं है, बल्कि वो आपके व्यक्तिगत विकास का एक जरिया बन जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसे हम बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से माप सकते हैं, और हाँ, कार्यस्थल पर इसे विकसित भी किया जा सकता है। हमारी आज की ये पूरी चर्चा एक बेहद अहम और एकदम वास्तविक शोध पत्र पर आधारित है, जो इसी थ्राइविंग की गहराइयों को खंगालता है। बिल्कुल, और ये पेपर कोई आम पेपर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पेपर प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पब्लिश हुआ है, जो अकादमिक दुनिया में एक ABDC-A स्टार जर्नल माना जाता है। और इस शानदार रिसर्च को एनी-कैथरीन क्लाइन, कॉर्ट W रूडोल्फ और हैन जाकर ने लिखा है। ये लोग लीप्जिग यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन और सेंट लुइस यूनिवर्सिटी जैसे दुनिया के बेहतरीन संस्थानों से जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये थ्राइविंग का विषय आज के समय में इतना प्रासंगिक इसलिए भी है ना, क्योंकि ये इंसान के सस्टेनेबल या कह लें कि टिकाऊ विकास की बात करता है। मतलब हम खुद को लंबे समय तक ऊर्जावान कैसे रख सकते हैं। सही बात है। और सस्टेनेबिलिटी की इस बात से मुझे अपने उन वफादार सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत ही आत्मीय सी जानकारी साझा करनी है, जो हमें लगातार सुनते आ रहे हैं। मार्च 2026 से हमारा ये शो अब एक साप्ताहिक कार्यक्रम बन गया है। हाँ, अब हमारी ये चर्चाएं हर रविवार और सोमवार को आती हैं। बिल्कुल,
और रविवार का जो अंक है वो किसी क्लासिक पेपर या किसी बेहतरीन बुक रिव्यू पर केंद्रित होता है, जबकि सोमवार की चर्चा हमेशा टॉप टियर पीयर रिव्यूड जर्नल्स के पब्लिकेशंस पर ही केंद्रित रहती है। और मुझे लगता है हमें इस बदलाव के पीछे का जो असल कारण है वो भी बताना चाहिए। अरे हाँ बिल्कुल, ये हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में एआई असिस्टेड तकनीकें बैकएंड पर काम करती हैं, लेकिन इन विशाल डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए ना पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है, जो हमारी प्रकृति और जलवायु पर भारी पड़ती है, जो कि बहुत चिंताजनक है। तो हमारे इस शो की साप्ताहिक रिलीज को सीमित करना जलवायु परिवर्तन की दिशा में मदद करने का बस एक छोटा सा प्रयास है। हम दुनिया को समझना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया के संसाधनों की कीमत पर नहीं। बहुत खूब कहा आपने। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सस्टेनेबल कदम हम अपनी चर्चाओं की गुणवत्ता से कोई भी समझौता किए बिना उठा रहे हैं। इसी कड़ी में कल की चर्चा में हम जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का एक बहुत ही हालिया पेपर शामिल करेंगे, जो कि एक और ABDC-A स्टार जर्नल है। अरे वाह, तो कल का पेपर किसने लिखा है? इसे यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के प्रोफेसर ग्यानसारे और उनके सहलेखकों ने लिखा है। और मजे की बात बताऊं, प्रोफेसर ग्यानसारे का ये जो नया शोध है ना, ये आज के इसी क्लासिक पेपर से बहुत गहराई से प्रेरित है। मतलब विज्ञान इसी तरह तो आगे बढ़ता है, एक शोध दूसरे के लिए रास्ता बनाता है। बिल्कुल। प्रोफेसर ग्यानसारे ने अपने पेपर में खुद लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं, क्लाइन, रुडोल्फ और जाकर के 2019 के मेटा एनालिटिक अध्ययन ने हमें थ्राइविंग साहित्य के भीतर एंगेजमेंट कंस्ट्रक्ट की स्थिति की आलोचना करने का अवसर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आज के हमारी ये चर्चा कल के उस नए रिसर्च को समझने के लिए एक बहुत मजबूत नींव का काम करेगी। एकदम सही। इसी वजह से सुनने वालों से हमारा ये बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि वे थोड़ा समय निकालकर इस बहुत ही विचारशीलता से तैयार किए गए और कड़ाई से पीयर रिव्यू किए गए लेख को जरूर पढ़ें। इसका लिंक शो नोट्स में उपलब्ध है। तो चलिए उस शुरुआती कहानी पर वापस लौटते हैं, जहां कोई इंसान सोमवार की सुबह पूरी ऊर्जा के साथ उठता है। जो लोग अकादमिक रिसर्च की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए इस थ्राइविंग के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ खुश रहने से अलग कैसे है? इसे गहराई से समझने के लिए ना पहले हमें इस पेपर की कार्यप्रणाली को देखना होगा। ये कोई किसी एक छोटी सी कंपनी में किया गया साधारण सा प्रयोग नहीं है। ये एक मेटा एनालिसिस है। मेटा एनालिसिस। हाँ, इसका मतलब है कि लेखकों ने 73 अलग अलग स्वतंत्र सैंपल्स का एक साथ अध्ययन किया है, जिनमें कुल मिलाकर 21,000 से भी ज्यादा कर्मचारी शामिल थे। अरे बाप रे, 21,000? बिल्कुल। और जब आपके पास 21,000 लोगों का डेटा होता है ना, तो किसी एक कंपनी का खराब माहौल या किसी एक शहर की संस्कृति का असर खत्म हो जाता है। जो सामने आता है वो शुद्ध मानव मनोविज्ञान होता है। ये तो बहुत ही व्यापक है। तो इस पेपर में थ्राइविंग को दो मुख्य चीजों के एक बहुत ही संतुलित मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला है वाइटैलिटी, यानी अंदर से बहुत ऊर्जावान, उत्साही और जीवंत महसूस करना। और दूसरा है लर्निंग, यानी निरंतर नया ज्ञान और कौशल सीखना। तो इसमें ऊर्जा और ज्ञान दोनों का संगम है। क्या हम इस पूरी थ्राइविंग की अवस्था को एक स्मार्टफोन की तरह देख सकते हैं? स्मार्टफोन? वो कैसे? मतलब मान लीजिए कि जो वाइटैलिटी है वो फोन की बैटरी का चार्ज है, और जो लर्निंग है वो आपके सॉफ्टवेयर का नया अपडेट है। अब अगर आपके फोन की बैटरी 100% फुल है, लेकिन सॉफ्टवेयर कई साल पुराना है, तो भी फोन नए ऐप्स नहीं चला पाएगा, वो अटकेगा। हाँ, वो पुराना पड़ जाएगा। और अगर सॉफ्टवेयर बिल्कुल नया है लेकिन बैटरी ही खत्म है, तो भी फोन किसी काम का नहीं। इसका मतलब है कि फोन को सही से चलाने के लिए, उसे थ्राइव करने के लिए दोनों का एक साथ होना जरूरी है। तो क्या अगर कोई इंसान काम पर लगातार नई चीजें नहीं सीख रहा है, तो वो बस वहां सरवाइव कर रहा है, दिन काट रहा है? मुझे आपकी ये स्मार्टफोन वाली एनोलॉजी बहुत पसंद आई। ये बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि ये दिखाती है कि एक के बिना दूसरा अधूरा क्यों है। बैटरी और सॉफ्टवेयर दोनों का साथ होना ही असली परफॉर्मेंस देता है। और मनोवैज्ञानिक और अकादमिक नजरिए से देखें तो इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। अब वाइटैलिटी जो है ना, वो काम में खुशी या आनंद का अनुभव लाती है, जिसे स्प्रित्जर के 2005 के मॉडल में और मनोविज्ञान में हेडोनिक वेलबींग कहते हैं। ये वो खुशी है जब आप दोस्तों के साथ कॉफी पीते हैं या आपका मूड बहुत अच्छा होता है। लेकिन सिर्फ अच्छा मूड होना तो काफी नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ कॉफी पीने से आप कंपनी की कोई जटिल समस्या तो नहीं सुलझा सकते। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर लर्निंग का हिस्सा काम आता है। लर्निंग व्यक्ति की क्षमता,
उसके जीवन के अर्थ और उसके वास्तविक विकास को दर्शाती है, जिसे यूडेमोनिक वेलबींग कहा जाता है। यूडेमोनिक वेलबींग। हाँ, ये वो गहरी संतुष्टि है जो आपको तब मिलती है जब आप किसी बहुत ही मुश्किल समस्या को सुलझाते हैं। हो सकता है उस प्रक्रिया में आपको बिल्कुल मजा ना आए, शायद आप बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो। हाँ, सिरदर्द हो जाए एकदम। बिल्कुल, लेकिन जब आप उसे सीख लेते हैं तो आपको एक गहरी सार्थकता महसूस होती है। थ्राइविंग इन्हीं दोनों का संगम है, इसलिए वास्तव में थ्राइव करने के लिए इन दोनों का एक साथ एक ही समय पर होना अनिवार्य है। मतलब आप सिर्फ हंसते खेलते रहकर काम नहीं चला सकते और सिर्फ रात दिन किताबें पढ़कर बिना ऊर्जा के भी आगे नहीं बढ़ सकते। एकदम सही। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। अब जब हम समझ गए हैं कि ये थ्राइविंग नाम का स्मार्टफोन काम कैसे करता है, तो मेरे दिमाग में जो सबसे स्वाभाविक सवाल आ रहा है वो ये है कि इस फोन को हम चार्ज कैसे करें और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करें। बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अकादमिक शोध के अनुसार किसी कर्मचारी के भीतर ये थ्राइविंग की स्थिति पैदा कैसे होती है, वो कौन से स्विच हैं जिन्हें दबाने से ये वाइटैलिटी और लर्निंग का इंजन चालू होता है। इस पेपर में इस प्रक्रिया को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से समझाया गया है। इसमें उन कारणों या पूर्ववर्ती कारकों जिन्हें एंटीसीडेंट्स कहा जाता है, मुख्य रूप से 2 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। ओके। पहला हिस्सा है व्यक्तिगत विशेषताओं का। इसमें जो सबसे प्रमुख कॉन्सेप्ट है वो है साइकोलॉजिकल कैपिटल। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके दिमाग की वो पूंजी है जिसमें 4 चीजें शामिल होती हैं: आशा, आत्मविश्वास, लचीलापन और आशावाद। जिन लोगों की पर्सनालिटी प्रोएक्टिव होती है और जो अपने काम में अर्थ खोज लेते हैं, वे स्वाभाविक रूप से नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो उनका लचीलापन उन्हें टूटने नहीं देता, बल्कि वो उस मुश्किल से कुछ नया सीखते हैं और इसी वजह से वो काम पर अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। अच्छा, लेकिन यही मुझे बड़ी उलझन हो रही है। क्या? ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये थ्राइविंग केवल उन खास टाइप ए लोगों के लिए ही बनी है जो जन्म से ही बहुत प्रोएक्टिव होते हैं या जो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सबसे घुलते मिलते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा शांत है, इंट्रोवर्ट है, जो खुद से आगे बढ़कर हर मीटिंग में सबसे पहले नहीं बोलता लेकिन अपने काम में बहुत अच्छा है, तो क्या ऐसे लोग थ्राइव नहीं कर सकते? क्या ये पूरा खेल सिर्फ इंसान के जेनेटिक्स या उसके अपने व्यक्तिगत स्वभाव का ही है? मैं आपकी उलझन समझ सकती हूँ। ये एक बहुत ही वाजिब शंका है जो अक्सर इस विषय को पढ़ते समय उठती है। और मजे की बात यह है कि 21,000 लोगों के इस मेटा एनालिसिस का सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति का स्वभाव सब कुछ नहीं होता। अच्छा, तो और क्या जरूरी है? लेखकों ने जो दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया है वो है संबंध परक विशेषताएं या रिलेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। भले ही आप स्वभाव से बहुत शांत हों, लेकिन अगर आपके काम का माहौल सही है तो आप पूरी तरह से थ्राइव कर सकते हैं। तो ये माहौल आखिर काम कैसे करता है? मतलब क्या ये सिर्फ ऑफिस में फ्राइडे को पिज्जा पार्टी देने से बन जाता है? नहीं, इसका मनोविज्ञान पिज्जा पार्टी से बहुत अलग और गहरा है। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट आता है जिसे लीडर मेंबर एक्सचेंज या LMX कहा जाता है। LMX? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि एक मैनेजर और कर्मचारी के बीच आपसी विश्वास और रिश्ते की गुणवत्ता कैसी है। ये सिर्फ बॉस के अच्छा होने के बारे में नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के बारे में है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मतलब जहां आप खुलकर बात कर सकें। बिल्कुल। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे गलतियां होंगी। अगर आपको एक ऐसा सपोर्टिव लीडर मिलता है जो गलती होने पर आपको सबके सामने जलील करने के बजाय उस गलती से सीखने का मौका देता है, तो आप रिस्क लेने से डरेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लर्निंग वाला सॉफ्टवेयर अपडेट है वो तभी इंस्टॉल होगा जब आपके पास वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का माहौल हो। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी तरह एक और फैक्टर है जिसे परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट कहते हैं। जब कर्मचारी को लगता है कि उसकी संस्था उसके भले की परवाह करती है, तो उसकी जो वाइटैलिटी यानी ऊर्जा है वो खुद को बचाने या ऑफिस की राजनीति में उलझने में खर्च नहीं होती। वो पूरी ऊर्जा काम पर लगती है। बिल्कुल, ये एक पूरी तरह से सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ अनुभव है।
मेटा एनालिसिस में ये भी सामने आया कि अगर कार्यस्थल पर असभ्यता या इनसिविलिटी है, यानी लोग मीटिंग्स में आंखें घुमाते हैं, तंज कसते हैं या रूखेपन से बात करते हैं, तो वो इस थ्राइविंग को तुरंत खत्म कर देती है। मेरे पास लर्निंग के लिए, कुछ नया सीखने के लिए कोई कॉग्निटिव स्पेस बचेगा ही नहीं। आपने बहुत ही सटीक तरीके से इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझाया है। इसीलिए आसपास का माहौल और टीम का सपोर्ट व्यक्ति के अपने स्वभाव से कहीं बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। तो इसका मतलब है कि थ्राइविंग एक साझा जिम्मेदारी है। हाँ, ये सिर्फ कर्मचारी का काम नहीं है कि वो हर सुबह खुद को मोटिवेट करके ऑफिस लाए, बल्कि ये संस्था की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा सुरक्षित और विश्वास से भरा माहौल दे। 100%। लेकिन देखिए, एक कंपनी के नजरिए से सोचें तो ये सब बहुत समय लेने वाला और मुश्किल काम लगता है। किसी भी संस्था या कंपनी को इस थ्राइविंग पर इतना पैसा और ध्यान क्यों देना चाहिए? मतलब इसका वास्तविक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? इसके परिणामों को समझना किसी भी मैनेजर या लीडर की आंखें खोलने के लिए काफी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर इंसान के जीवन की गुणवत्ता और कंपनी के मुनाफे दोनों से जुड़े हैं। पेपर में इसके आउटकम्स को बहुत ही स्पष्ट तरीके से मापा गया है। तो पहला आउटकम क्या है? पहला है स्वास्थ्य। जो लोग काम पर थ्राइव करते हैं, उनमें बर्नआउट या अत्यधिक मानसिक और शारीरिक थकान का स्तर काफी कम होता है। उनका सब्जेक्टिव स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहता है। बर्नआउट कम क्यों होता है? क्या वे लोग काम कम करते हैं? नहीं, काम कम नहीं होता, लेकिन उनके पास संसाधनों का संतुलन होता है। बर्नआउट तब होता है जब आपकी नौकरी आपसे आपकी सारी ऊर्जा छीन लेती है और बदले में आपको कुछ नहीं देती। का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। चलिए, ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात, लेकिन कंपनी को, मतलब संस्था को क्या फायदा होता है? कंपनी को फायदा कर्मचारियों के काम के प्रति उनके नजरिए और प्रदर्शन से होता है। ऐसे कर्मचारी अपनी नौकरी से कहीं ज्यादा संतुष्ट होते हैं। वे अपनी संस्था के प्रति गहराई से समर्पित होते हैं। और शायद वो नौकरी छोड़कर भी कम जाते होंगे। बिल्कुल, उनके मन में नौकरी छोड़ने का विचार बहुत कम आता है, जिसे टर्नओवर इंटेंशंस कहते हैं। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, थ्राइव करने वाले कर्मचारियों का न केवल रूटीन टास्क परफॉर्मेंस अच्छा होता है, बल्कि उनका क्रिएटिव परफॉर्मेंस भी कमाल का होता है। क्रिएटिव परफॉर्मेंस भी? हाँ, रचनात्मकता का सीधा सा मतलब क्या है? दो अलग अलग चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाना। सही बात है। अगर आप लगातार नया ज्ञान नहीं सीख रहे हैं और आपके पास उस ज्ञान को जोड़ने की ऊर्जा नहीं है, तो आप रचनात्मक कैसे हो सकते हैं? थ्राइविंग वो ईंधन है जो क्रिएटिविटी की गाड़ी को चलाता है। ये सारी बातें सुनने में तो एक बहुत ही आदर्श और परफेक्ट कॉर्पोरेट दुनिया जैसी लग रही हैं, लेकिन अकादमिक जगत में एक बहुत पुरानी बहस है और मैं यहाँ थोड़ा शैतान का वकील यानी डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, पूछिए। क्या हम सिर्फ पुरानी शराब को नई बोतल में नहीं डाल रहे हैं? मतलब मैनेजमेंट की दुनिया में वर्क एंगेजमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन या पॉजिटिव एटीट्यूड जैसे शब्द तो दशकों से मौजूद हैं। बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म में हर साल एंगेजमेंट सर्वे करती हैं। तो ये थ्राइविंग उन सब से कैसे अलग है? क्या ये सिर्फ एचआर का एक नया बज़वर्ड नहीं है? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और ये सवाल हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो इस विषय को पहली बार पढ़ता है। और इसी सवाल का गणितीय और सांख्यिकीय उत्तर देना इस शोध पत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, उन्होंने इसे साबित किया है? हाँ, लेखकों ने इस बात को साबित करने के लिए सांख्यिकी का एक बहुत ही कड़ा तरीका इस्तेमाल किया, जिसे इंक्रीमेंटल वैलिडिटी कहते हैं। अब ये इंक्रीमेंटल वैलिडिटी का सरल मतलब क्या है? इसका सरल मतलब ये जांचना है कि क्या ये नया कॉन्सेप्ट हमें कुछ ऐसा बता रहा है जो हमें पहले से मौजूद कॉन्सेप्ट से पता नहीं था। क्या ये कुछ नया जोड़ रहा है? मतलब कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है या नहीं? बिल्कुल। मान लीजिए आप एक वेन डायग्राम देखते हैं जहां वर्क एंगेजमेंट का एक बहुत बड़ा गोला है। एंगेजमेंट का मुख्य मतलब होता है काम के प्रति समर्पण और पूरी तरह से उसी में डूब जाना। लेखकों ने सांख्यिकीय रूप से कर्मचारियों के पॉजिटिव इफेक्ट्स, यानी उनके अच्छे मूड और वर्क एंगेजमेंट के प्रभाव को पूरी तरह से अलग कर दिया। और उन्होंने पाया कि इन दोनों को एक तरफ रखने के बावजूद थ्राइविंग अपने आप में काम के प्रदर्शन और रचनात्मकता को बढ़ाने में एक बिल्कुल अलग और अनूठा योगदान देती है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ वर्क एंगेजमेंट का एक नया नाम नहीं है, इसके काम करने का तरीका सच में अलग है। बिल्कुल, और इसके पीछे का जो तर्क है वो बहुत स्पष्ट है। एंगेजमेंट आज के प्रदर्शन के बारे में है, लेकिन थ्राइविंग में जो लर्निंग यानी सीखने का हिस्सा जुड़ा हुआ है ना, वो इसे बिल्कुल अलग और भविष्य के लिए तैयार बनाता है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है।
मान लीजिए एक कर्मचारी अपने मौजूदा काम में बहुत एंगेज्ड है, वो दिन में 10 घंटे बहुत मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन वो कुछ नया सीख नहीं रहा है। तो आज तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत शानदार होगी। हाँ, आज शानदार होगी, लेकिन जैसे ही बाजार में कोई नई तकनीक आएगी या कंपनी के सामने कोई नई चुनौती आएगी, वो इंसान एकदम से पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया। बिल्कुल सही। लेकिन जो कर्मचारी थ्राइव कर रहा है, वो न सिर्फ आज अच्छा काम कर रहा है, बल्कि वो लगातार सीख कर खुद को कल के अज्ञात भविष्य के लिए भी तैयार कर रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। एंगेजमेंट आज के प्रदर्शन को बनाए रखता है और थ्राइविंग आपको कल के भविष्य के लिए प्रासंगिक बनाए रखती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटना चाहें तो अकादमिक दुनिया और कॉर्पोरेट जगत के प्रैक्टिशनर्स के लिए इसके सबसे बड़े निष्कर्ष यानी की टेकअवेज क्या निकलते हैं? देखिए, अकादमिक शोधकर्ताओं के लिए तो ये मेटा एनालिसिस स्प्राइट्जर के मूल मॉडल को बहुत मजबूती देता है और ये साबित करता है कि ये एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण अवस्था है, लेकिन ये भविष्य का रास्ता भी दिखाता है। वो कैसे? हमें अब केवल एक व्यक्ति के स्तर पर नहीं, बल्कि टीम लेवल पर थ्राइविंग को समझने की जरूरत है। क्या एक पूरी की पूरी टीम एक साथ एक ही तालमेल में थ्राइव कर सकती है? ये एक बहुत अच्छा रिसर्च एरिया हो सकता है। हाँ, और साथ ही हमें ऐसे अध्ययनों की बहुत जरूरत है जो लंबे समय तक चलें, जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन कहते हैं, ताकि हम देख सकें कि सालों के दौरान किसी व्यक्ति की ऊर्जा और सीखने की क्षमता कैसे बदलती है। और जो लोग फील्ड में हैं, मतलब जो मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं या जो अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? उनके लिए सबक बहुत ही व्यवहारिक है। आप सिर्फ ऐसे लोगों को हायर करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते जो बहुत लचीले हों या बहुत दबाव सह सकते हों। मतलब सिर्फ रेजिलिएंट लोगों को काम पर रखना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपको एक लीडर के तौर पर सक्रिय रूप से एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहां मनोवैज्ञानिक सुरक्षा हो, जहां लोग गलतियां करने से न डरें, जहां एक दूसरे पर विश्वास हो और जहां की लीडरशिप लोगों को कंट्रोल करने के बजाय उन्हें सपोर्ट करे। जब माहौल में भरोसा होगा ना, तभी लोग वो नई चीज सीखने का जोखिम उठाएंगे जो अंततः उन्हें थ्राइव कराएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। माहौल ही वो उपजाऊ मिट्टी है जिसमें थ्राइविंग का ये नाजुक पौधा पनपता है। और इसी बात से मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रासंगिक और शायद आज के दौर का सबसे ज्वलंत सवाल आ रहा है। बताइए। आज के इस दौर में जहां काम करने के तरीका पूरी तरह से बदल रहा है, बहुत सारे लोग अब घर से काम कर रहे हैं, रिमोट वर्क कर रहे हैं या गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। ये तो है। जहां हम अपने सहकर्मियों से महीनों तक आमने सामने नहीं मिलते हैं, जहां वो ब्रेक थ्रू आइडियाज देने वाली कॉफी मशीन की चर्चाएं या वाटर कूलर के पास होने वाली अनौपचारिक बातचीत खत्म सी हो गई है, जहां मुश्किल दिन होने पर सामने बैठकर कंधे पर हाथ रखकर मिलने वाला वो मानवीय सपोर्ट मौजूद नहीं है, वहां हम ये सब कैसे हासिल करेंगे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। उस वर्चुअल दुनिया में जहां हमारे सारे काम के रिश्ते सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन, चैट बॉक्स और वीडियो कॉल के पीछे सिमट गए हैं, वहां हम ये संबंधपरक समर्थन कैसे बनाएंगे? क्या अकेले एक कमरे में स्क्रीन के सामने बैठकर बिना उस सामाजिक और मानवीय ऊर्जा के वाइटैलिटी और लर्निंग का वो शानदार संगम हासिल किया जा सकता है? क्या इस नई दुनिया में थ्राइविंग का रूप पूरी तरह से बदल जाएगा? सोचने वाली बात है। हमारे सुनने वालों से ये विनम्र आग्रह है कि वे इस गहरे सवाल पर खुद विचार करें, अपने आसपास के माहौल को देखें, अपने रिश्तों की गुणवत्ता को परखें और सोचें कि इस तेजी से बदलती दुनिया में वो अपनी वाइटैलिटी और लर्निंग के इस नाजुक संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं। इस विचारशील सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक और नए शोध और एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत सुकून और ऊर्जा के साथ अपना ध्यान रखें। Forestil dig lige en helt almindelig tirsdag på jobbet. Altså en arbejdsdag, hvor du ikke bare sidder og kigger på uret og venter på at få fri. Ja, de der dage, hvor man bare overlever frem til fyraften. Lige præcis. Men forestil dig i stedet, at du summer af sådan en dyb indre energi. Du kan nærmest fysisk mærke, at din hjerne udvider sig, fordi du lærer noget helt nyt. Det er jo en ret fantastisk følelse, når man endelig rammer den. Helt vildt. Altså, du drifter ikke bare gennem dine opgaver og streger ting fra en eller anden endeløs to-do-liste. Du blomstrer simpelthen. Du føler dig fuldstændig i live. Og hvornår har du egentlig sidst haft præcis den følelse? Det er et stærkt spørgsmål at starte ud med.
For sandheden er jo, at det er en tilstand, som rigtig mange af os jager. Men alt for ofte føles det bare som sjældne magiske øjeblikke, frem for noget, vi faktisk kan regne med i hverdagen. Og det er jo netop den her helt særlige tilstand, vi skal undersøge i dag. Vores samtale bygger på en virkelig banebrydende artikel fra det prestigefyldte Journal of Organizational Behavior, Som jo er et fuldstændig anerkendt ABDC-A tidsskrift. nemlig det er absolut topklasse. Artiklen hedder Thriving at Work af Meta-Analysis, og den er skrevet af et ret imponerende trekløver af forskere, altså Anne-Kathrin Kleine, som er tilknyttet Leipzig University og University of Groningen, Cort W. Rudolph fra St. Louis University og Hanne Sacher fra Leipzig University. Det er virkelig et stærkt hold. Det er det. Og inden vi for alvor åbner for deres fund, så har jeg lige en lille, men vigtig besked til dig, der lytter med. Du har måske bemærket det allerede her siden marts 2026, men vi udgiver nu faste episoder hver eneste søndag og mandag. Ja, om søndagen tager vi jo fat på en klassisk artikel eller en boganmeldelse. Præcis. Mens vi her om mandagen holder et stenhårdt fokus på de nyeste publikationer fra fagfællebegyndte tidsskrifter. Og vi elsker virkelig vores loyale abonnenter, så tusind tak, fordi du støtter det her initiativ. Og der er jo faktisk en meget bevidst klimavenlig årsag til, at vi har lagt os fast på netop den her rytme. Ja, fortæl lige lidt om det. Altså AI-assisterede produktioner trækker jo ret tungt på natur og klima, især med et betydeligt vandforbrug i de underliggende datacentre. Så ved at begrænse vores ugenlige udgivelser på den her måde, der giver vi faktisk aktivt tilbage til klimakampen. Uden at vi mister rigdommen i vores samtaler, vel? Lige præcis. Det handler om kvalitet. Og bare for at give et konceptuelt eksempel på, hvordan tingene ligesom hænger sammen, så har vi i morgen planlagt at se på en nyere artikel fra Journal of Occupational and Organizational Psychology. Også et ABDC-A tidsskrift. Og den er skrevet af professor Günsar fra University of Surrey og hans medforfatter, ikke? Jo, lige præcis. Og det fede er, at de blev direkte inspireret af dagens moderne klassiker. Professor Günsar formulerer det faktisk selv meget rammende. Han skriver, at den meta-analytiske undersøgelse af Kleine, Rudolph og Sacher gav dem muligheden for at kritisere placeringen af selve engagement-begrebet inden for litteraturen om at blomstre på arbejdspladsen. Det viser bare, hvordan den bedste forskning altid bygger broer til nye erkendelser. Så jeg vil virkelig indtrængende, men blidt opfordre dig til at tage dig tid til at læse den her gennemtænkte artikel. Den er strengt fagfællebedømt, og linket ligger lige nede i show notes. Den er absolut værd at læse. Men hvis du måske er helt ny inden for forskningsverdenen, eller du lige er startet på din egen forskningsrejse, så lad os starte helt fra bunden. Det her er en meta-analyse. Ja, hvilket er afgørende at forstå. For det betyder, at forskerne ikke bare har spurgt en håndfuld tilfældige mennesker. Nej vel, de har samlet data fra 73 uafhængige studier. Det er over 21.000 medarbejdere. Så de har ledt efter den ultimative sandhed om, hvad der faktisk får os til at trives, og hvad det fører til. Det er et enormt solidt datagrundlag. Okay, så lad os pakke dette ud. For at forstå, hvordan vi opnår denne her tilstand, så må vi jo først forstå, hvad den overhovedet består af. Forskerne bygger på Spreitzers model, som har 2 grundpiller. Vitalitet og læring. 2 meget forskellige, men utrolig vigtige elementer. Ja, så prøv lige at tænke på dig selv som en plante. Vitaliteten, det er vandet. Det er energien, følelsen af at være i live. Læringen, det er sollyset, altså væksten og retningen. Jeg kan rigtig godt lide den analogi. Så overlever du, men du strækker dig overhovedet ikke. Og hvis du kun får sollys, altså ny viden, uden at have energien til det, så udtørrer du af udmattelse. Du skal simpelthen have begge dele for at blomstre. Fuldstændig. Og i forskningen skelner de meget præcist mellem den hedoniske komponent, som altså er vitalitet, velvære og glæde i nuet. Det, der bare føles rart. Præcis. Og så den eudaimoniske komponent, som er læringen. Og eudaimonisk, det betyder egentlig at realisere sit potentiale og gro som menneske. Og det, der er så fascinerende i deres tal, det er den stærke statistiske sammenhæng mellem de to. De forstærker ligesom hinanden. Ligneragtigt. Når du lærer noget nyt, frigiver det mere hedonisk energi. Og når du har energien, har du overskuddet til at kaste dig ud i ny læring. Det er en motor, der kører. Så vi skal have både vand og sollys. Men når vi nu ved, hvad tilstanden er, så rejser det naturlige spørgsmål sig jo for dig, der lytter med. Hvordan får du fat i den her tilstand? Altså,
Er det din egen skyld, hvis du ikke blomstrer, eller er det din arbejdsplads? Ja, det er jo et helt centralt spørgsmål at stille. For jeg må lige spørge dig kritisk her. Er det her ikke bare forudbestemt? Nogle mennesker er vel bare født som overskudsmennesker med en proaktiv personlighed, og så må vi andre bare kæmpe mere for det. Altså det, der er fascinerende her, er jo, at ja, de individuelle træk spiller faktisk en massiv rolle. Okay, så det gør de. Ja, de kigger på det, der hedder psykologisk kapital. Det vil sige dit håb, din optimisme og robusthed. Og ja, proaktivitet er vigtig, og her ligger guldet altså i dataene. De relationelle faktorer er fuldstændig lige så afgørende. Så miljøet vejer lige så tungt. Mindst støttende ledelse, tillid og psykologisk sikkerhed er altomfattende. Det de kalder LMX, altså udvekslingen mellem ledere og medarbejdere. Og modsat kiggede de også på den dårlige adfærd. Uhøflighed på arbejdspladsen. Uhøflighed simpelthen. Ja. Nedladende kommentarer, rulle med øjnene. Det dræner din vitalitet lynhurtigt, uanset hvor proaktiv du er som person. Så konklusionen er klart, at det er et samspil. Det er en delt regning. Det giver rigtig god mening. Så lad os sige, at du har fundet balancen, du er fyldt med vitalitet, og du lærer hver dag, du blomstrer. Hvad betyder det rent faktisk for dig, for din sundhed og for den virksomhed, du er ansat i? Altså, hvad er frugterne af alt det her? Frugterne er enorme. Studiet viser nogle utroligt slående resultater. Udbrændthed, altså burnout, det styrtdykker simpelthen. Din jobtilfredshed og loyalitet stiger enormt. Og hvad med bundlinjen for virksomheden, for at sige det lidt groft? Jamen, der ser vi, at den kreative performance og evnen til at løse komplekse opgaver forbedres markant, fordi hjernen er i gang og har overskud. Men vent lige en gang. Er alt det her ikke bare et meget fint akademisk ord for arbejdsengagement? Jeg mener, hvordan adskiller det her sig fra bare at være rigtig glad for sit arbejde og løbe stærkt? Det er en rigtig god pointe. Og hvis vi forbinder dette til det større billede, så handler det om et koncept, man kalder inkrementel validitet. Okay, uden alt for meget akademisk jargon, hvad betyder det i praksis? Det betyder, at de har testet det rent matematisk. Og studiet beviser, at begrebet at blomstre faktisk kan forudsige din performance og mentale sundhed ud over og meget bedre end blot at måle på, om du er engageret eller bare i godt humør. Er det læringen, der gør forskellen? Så brænder du ud på sigt. Det er læringen, der sikrer bæredygtigheden i engagement. Wow. Så engagement uden læring er bare en opskrift på udbrændthed. Det er alligevel vildt. Og vi har jo set, at tilstanden virker på tværs af linjen, men der er faktisk en helt specifik demografisk detalje i kildematerialet her. En detalje, som jeg tror vil ændre manges perspektiv på alder og karriere. Ja, deres moderatoranalyse på alder er virkelig et af højdepunkter. Ja, for her bliver det virkelig interessant. Man tænker jo ofte, at læring og vækst primært er for de unge. Men alder gør dig overhovedet ikke mere tilbøjelig til at blomstre i sig selv. Nej, tværtimod faktisk. Ja, hvis du er en ældre medarbejder, og du rent faktisk formår at blomstre med både vitalitet og læring, så er den positive effekt på din performance langt stærkere, end den er for de yngre medarbejdere. Det er jo helt utroligt. Hvorfor ser vi den forskel? Fordi de ældre medarbejdere har årtiers erfaring lagret på harddisken. De har ligesom et større fundament. Lige præcis. Når de først får et skud ny læring og vitalitet, så har de et massivt eksisterende fundament, de kan koble den nye viden op på. Og det skaber simpelthen en eksplosion af effektivitet og kreativ overskud. Det er jo et fantastisk argument for livslang læring. Fuldstændig. Det knuser totalt myten om, at læring og vækst kun er noget, der hører ungdommen til. Det er måske den største superkraft, seniorerne overhovedet har. Så smukt. Og det slutter ligesom ringen her. Vi har nu rejst fra, hvad det vil sige at blomstre, til hvordan vi vander og plejer den tilstand, og til sidst, hvilken frugten bærer for os alle. Det er en utrolig livsbekræftende artikel. Så hvad betyder alt dette for dig, der sidder derude og lytter? Hvis vi skal samle de vigtigste takeaways op for både praktikere og forskere. For praktikerne, altså ledere og medarbejdere ude i virksomhederne, så pointerer studiet, at vi ikke bare skal forsøge at fjerne stress og fjerne hindringer. Man kan simpelthen ikke bare fjerne sig til trivsel. Nej, man skal bygge det. Man skal aktivt designe et miljø for tillid, støtte og mikrolæring i selve hverdagen. Man skal skabe plads til den eudaimoniske vækst. Og hvad med de akademikere og forskere, der måske sidder og lytter med? Hvor skal forskningen hen herfra? Der er et skrigende behov for at forske i, hvordan teams blomstrer kollektivt, i stedet for kun at kigge på individet. Og så er vi nødt til at bruge longitudinelle studier, altså hvor vi følger de samme mennesker over mange år.
Så vi kan se, hvordan det svinger fra dag til dag og år til år. Præcis, for at forstå den sande dynamik. Spændende. Alt dette rejser jo et utroligt vigtigt spørgsmål, som jeg gerne vil henvende mig direkte til dig med, før vi slutter. Tænk lige over. Den fremtid, vi er på vej ind i lige nu med kunstig intelligens og automatisering. Ja, det kommer til at forandre arbejdsmiljøet fundamentalt. Ja, for AI kan jo tage sig af rutinerne, og måske gøre os meget mindre stressede på den hedoniske front. Men hvis maskinerne fremover overtager selve opgaveløsningen, hvordan sikrer du dig så, at du stadig får din daglige dosis eudaimonisk læring? Det er det helt store spørgsmål. Det er værd at tage med sig videre. En utrolig vigtig refleksion at slutte af på. Og med de ord vil vi bare sige tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Pas rigtig godt på dig selv derude. Pas på hinanden. Og lad os alle huske at passe lidt på vores fælles klima. Vi høres ved næste gang.